Hello guys, welcome to our YouTube channel AutoWorks Pakistan. In this video we will be discussing about the most important sensor, which is Engine Coolant Temperature Sensor. This sensor is one of the most critical part of the engine coolant system. Let me give you a brief introduction of the points that we are gonna discuss in this video. Definition, thermistor, the types of ECT sensor, working of ECT, functions, symptoms of bad ECT sensor. Then I will explain you the working of this sensor through this diagram. So let's discuss what is engine coolant temperature sensor. ECT sensor is that sensor which monitors and regulates the temperature of the engine's coolant. It is basically a thermistor, and we all know that thermistor is a temperature sensitive resistor. Now let's discuss the types of ECT sensor. There are two types of this sensor, NTC and PTC. NTC is negative temperature coefficient, PTC is positive temperature coefficient ECT sensor. All over the world, the ECT sensor that are being used are NTC type mostly. And what is NTC ECT sensor? It is the type of ECT sensor whose resistance is inversely proportional to the temperature. Basically, it is made up of that semiconductor material whose resistance decreases with the rise in temperature and vice versa. Now let's discuss the working of engine coolant temperature sensor. I will explain the working of ECT sensor through this diagram. Now this is the coolant. This is the ECT sensor. The tip of the ECT sensor is immersed in the coolant. इसकी जो टिप है ये एक्सपोज हुई हुई होती है कूलेंट के साथ. From the ECU इसको 5 वोल्ट का रेफरेंस सिग्नल कॉन्टिन्यूसली ECT सेंसर को मिल रहा होता है. अब इस कूलेंट के टेम्परेचर की बेसिस पर इस ECT सेंसर के अक्रॉस जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो वेरी करती है. कूलेंट का टेम्परेचर अगर कम है तो रेजिस्टेंस अक्रॉस द ECT सेंसर वुड बी हाई एंड द वोल्टेज ड्रॉप वुड ऑल्सो बी हाई. कूलेंट का टेम्परेचर ज़्यादा है, लाइक 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है, the resistance across the ECT sensor would be less and the voltage drop would also be less. So ये सब values in the form of a voltage signal ECU को मिलती हैं. ये ECT sensor इस voltage signal के थ्रू इसके साथ ECU के साथ communicate कर रहा होता है. इसी voltage signal से इसको पता चलता है कि कूलेंट का टेम्परेचर क्या है. Now this is the VT curve, voltage temperature curve. जैसे जैसे कूलेंट का टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ECT सेंसर वो डिक्रीज होता रहता है. Now let's discuss the function of ECT sensor. The most important function of the engine coolant temperature sensor is that it prevents the engine from overheating. It is one of the most important sensor that plays a very much vital role in setting the ignition timing. इस फीडबैक सिग्नल की बेसिस पर ECU ये फंक्शंस परफॉर्म करता है. इग्निशन टाइमिंग को सेट करता है, फ्यूल इंजेक्शन टाइमिंग को सेट करता है, एयर फ्यूल रेशियो को सेट करता है
लाइक जैसे कोल्ड स्टार्ट होता है तो हमारी व्हीकल को रिच मिक्सचर रिक्वायर होता है, तो इन्हीं क्योंकि उस टाइम कूलेंट का टेम्परेचर कम होता है और रेजिस्टेंस अक्रॉस द ईसीटी सेंसर वो ज़्यादा होती है, तो ECU जो है वो रिच मिक्सचर बनाता है। जैसे इंजन रनिंग स्टेट में आ जाता है तो हमारा जो कूलेंट है उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, रेजिस्टेंस अक्रॉस द ECT सेंसर वो कम हो जाती है। तो ECT सेंसर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सब फंक्शंस को परफॉर्म करने में। नाउ लेट्स डिस्कस द सिम्टम्स ऑफ अ बैड ECT सेंसर। अगर तो आपका ECT सेंसर बहुत ज़्यादा उसके अंदर कोई मैल फंक्शनिंग हुई हुई है, क्योंकि इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो ये मैल फंक्शन कर सकता है। तो अगर सिम्टम ये है कि आपका इंजन बहुत ज़्यादा ओवरहीट कर रहा है, रफ आइडलिंग है, आपकी फ्यूल एफिशिएंसी कॉन्टिन्यूसली ड्रॉप कर रही है, और आपका जो ECT सेंसर है, आपका इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर कॉन्टिन्यूसली एक कोल्ड सिग्नल दे रहा है ECU को, दैट मीन्स उसके अक्रॉस जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई आ रही है, लाइक 2K से 3K के दरमियान वो उतनी ही शो कर रहा है कॉन्टिन्यूसली। तो ECU क्या करेगा कि वो उन फॉल्स रीडिंग्स के बेसिस पर वो रिच मिक्सचर बनाता रहेगा, तो आपकी फ्यूल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और ये एक सिम्टम है ऑफ अ बैड ECT सेंसर। These are the error codes that are related to the faulty ECT sensor P0116, P0117, P0119. So now let me tell you about the working of this diagram. Basically होता क्या है कि जब temperature of the coolant is below 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये जो वोल्टेज सिग्नल है, जो रेफरेंस वोल्टेज ECU हमारे ECT सेंसर को दे रहा है, वो थ्रू दिस हाई वैल्यू रेजिस्टर देगा when the temperature is below 50 degree centigrade, and when the temperature is above 50 degree centigrade, the ECU will send this reference voltage signal to this ECT sensor through this low value resistor. So this is the working of ECT sensor. This sensor plays a very much important role in other functions too, like idle air control position, oxygen sensor closed loop functions, canister purge on off times. So now I will tell you about the location of the ECT sensor. So this is our engine block. ये इनलेट आउटलेट वाल्व्स हैं और ये इसका कूलेंट पैसेज है। इसी के साथ यहाँ पर हमारा ECT सेंसर, इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर लगा होता है। दिस इज़ अ 3-पिन इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। इसमें एक पिन होती है जो 5 वोल्ट का ECU से रेफरेंस सिग्नल आ रहा होता है उसकी, एक ग्राउंड की, और जो एक रिटर्न सिग्नल जाता है फ्रॉम द ECT टूवर्ड्स ECU। तो ये 3 पिन्स का ECT सेंसर है।